Okay. Before start the problem set 38, I hope everyone know how to find out place value of each and every digit. आपको सबको पता है कि place value कैसे निकालना है. Okay. But we are studying decimal fraction. Okay. So how to find out place value of every digit in the decimal fraction we are going to learn today. Okay. Now say suppose I am having the number 31.4. So here 31 is a whole number and 0.4 is a fraction, because that's why it is coming after the decimal point. Okay. So we'll make the column first. Now students, please listen carefully. Okay. Now I am having less place, that's why I am making small columns and I'll show you here. यहाँ पे मैं आपको उसका आंसर बताने वाली हूँ. Okay, but when you will solve the examples, that time you are going to write in these boxes also. Okay, so first column is the digit. I am writing only D, but you will write the full digit. Okay, digit. So first write the digit. First digit 3, second digit 1, third digit 4. So first column is digit. Okay, now in the second row, what you will write? Place of digit. Place of the digit. दूसरा रो के फर्स्ट कॉलम में आएगा place of the digit. Now this 3, this 1 and this 4, we have to tell the places of the digit. Now see, this 1 is at the unit place. ये 1 कहाँ पे है? Unit place पे. I hope everyone know that ये साइड आता है unit, 10, 100, 1000, 10,000, like this we learn. lakh, 10 lakh, crore. ठीक है, ये ऐसे बढ़ते जाएंगे. And after the decimal point, how the places will come? 10th, we'll put th, 10th, 100. Okay, सबके पास th लगेगा. Okay, so 10th, 100, thousands, like this the places will go increasing. Okay, so here is the digit 4. Now this 1 is on the unit place, this 3 is on the 10th place, and this 4 is on the 10th place. This after decimal point, first place is the 10th place, th, 10th place. Okay, so we'll write the place of the 3, tens. It is on the 10th place. 1 is on the unit place. Okay, units. And this 4th is on the 10th place. Okay, this 4 is on the 10th place. Now next is the place value. In the third row, first column, we'll write place value. What we have to find out? Place value. हमें क्या ढूंढना है? Place value. So 3 is on the 100 place. So what we'll write? 3 into 100 will multiply by 100. Will multiply by 100. So 3 into 100, 300. Everyone know na? If 3 is on the sorry, it is not the 100 place. Very sorry. It is on the 10th place. My mistake. So this 3 is on the 10th place. 10th place. So 3 into 10. सबको पता है units रहेगा तो हम लोग 1 से multiply करते हैं. If it is on the 10th place, we'll multiply by 10. If it is on 100 place, so we'll multiply by 100. Okay, like so on. It is on the 1000 place, so we'll multiply by 1000. तो ये place value निकलता है. Correct, no? So this 3 is on the 10th place. So 3 into 10. So place value of 3 is 30. Place value of 3 is 30. Okay. Now 1 is on the unit place. So 1 into 1. So place value of 1 is 1 only. Okay. Now this 4th is on the 10th place. Now it is after the decimal point. So how we'll do? 4 into 1 upon 10. 4 into 1 upon 10. 10 plus का value क्या है? 1 upon 10 ना? If we'll go on the 100 place, 1 upon 100. We'll go 1000 place, so 1 upon 1000, so on.
एक एक जीरो बढ़ते जाएगा. So 4 into 1 upon 10 क्या आएगा आंसर? 4 1 जा 4 upon 10. 4 1 जा 4 and upon this 10 will come. Now if in the denominator 1 0 is there, then while writing the fraction after decimal point, how many places will come? Only one place. Whole number is not there, so we'll put 0. After 0 we'll put the decimal point. Okay, now downside only 1 0 is there. नीचे सिर्फ एक जीरो है, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस आएंगे? 1. सो 0.4. सो आवर आंसर इज 0.4. सो हाउ यू विल राइट? 4 into 1 upon 10 and answer is 0.4. So here place is not there, that's why I am writing here shortcut, but you will follow this all steps. 4 into 1 upon 10 equals to 4 upon 10 equals to 0.4. 0.4. Correct? Correct? Now see, the number is 2000. The number is 206.86. 206.86. This is a decimal fraction. So how we'll write the place value of each and every digit of this decimal fraction? Now I am not making column because place is not there, but you will make the column. First column is what? Digits. So you will write all these 5 digits. Okay, after making boxes. Then second is place of every digit, place of the digit. So you will write the places. Okay, this 2 is on the 100 place, this 0 is on the 10 place, this 6 is on the unit place. Correct na? ऐसे ही जाएगा ना, unit, tens, 100. This 8 is on the 10th place. 10th, I am writing here only th. And this 6 is on the 100th place. I am writing here hth. I am not writing full spelling, but please make it understand. The after decimal point, the first place is the 10th place and second place is the 100th place, and the places are increasing like this. Okay. Now, third column is what? Place value of every digit. Okay, so I'll take the first digit 2. Okay, so how? Tell me the place value. 2 into 100. Why I'm multiplying by 100? Because this 2 is on the 100 place, so its place value will come 200. Its place value will come 200. I'm writing here little bit short so you will understand. First digit is 2. 2 into 100. So place value of this 2 is 200. Now, this 0 is on the 10th place. So 0 into 10, answer is 0 only. Why 0? Because if you multiply any number by 0, you will get 0. कोई भी नंबर से अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है. So place value of this 0 is 0. Then next is a 6. 6 is on the unit place. So 6 into 1 equals to 6 1s are 6. Now after decimal point 8 is there. So place value of 8. 8 into 1 upon 10. 8 into 1 upon 10. तो क्या आएगा? 8 1s are 8 upon 10. Now whole number is not there, so you will put 0. Okay, put the decimal point after 0. Now in the downside denominator 1 0 is there, 10 is there. So after decimal point, how many places will come? Only one place will come. Correct, no? कितने places आएंगे? सिर्फ एक ही place आएगा. So 0.8 is the place value of this 8. Now 6. Now we'll see the place value of 6. 6 is on the 100 place, so we'll multiply 1 upon 100 because it is after the decimal point, so that's why we are multiplying by 1 upon 100. So 6 1s are 6 upon 100. Now place is not there, please listen, pay attention carefully. 6 1s are 6 upon 100. Whole number is not there, so we'll put 0. Downside 2 zeros are there in the denominator, 100 is there. Okay, 100 is there. So in the answer after decimal point 2 places will come.
डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, इसका मतलब नीचे 100 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस आना चाहिए, करेक्ट? सो but in the numerator only one number is there, so second number will come as 0 and then 6 will come. So our answer is 0.06. So place value of this 6 is 0.06. Understood everyone? Now see here. Problem set 38. But for you people, I'm telling you again this question. I hope everyone visible. It is visible to you. So the 210.86. We have to tell the place value. We have to tell the place value. Okay. So first column is digit. First column is digit. Wait, I'm sharing again. Okay. So first is a digit, second is a place of that digit, and the third column is the place value. Okay. Third row में first column क्या आएगा? Place value. Now sorry, my mistake. Now 2 is on the 100 place in 210.86. This 2 is on the 100 place. This 2 is on the 100 place. Correct? 1 is on the 10th place. 0 is on the unit place. 8 is on the 10th place and 6 is on the 600 place. Okay? Correct? So 100 place. The place of this 2 is 100. 1 का place क्या है? 10. 0 का place क्या है? Unit. Okay? Then 8 is on the 10th place. 6 is on the 100th place. Place value of this 2 into 100. 2 into 100. So place value of 2 is 200. Correct? Then 1 into 10. So place value of this 10 is 10. Place value of this 1 is 10. 0 is on unit place, so its value is 0 only. 8 is on the 10th place, so 8 into 1 upon 10. So answer is 0.8. Correct? And 6 is on the 100 place, so 6 into 1 upon 100. So answer is 0.06, because in the denominator 2 zeros are there, means in the answer after decimal point 2 places will come, 1 and 2. तो 2 places के लिए यहाँ पे न्यूमरेटर में तो सिर्फ 6 ही है, करेक्ट नो? तो एक प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. ओके, सो we are going to solve the problem set 38. Okay, what is the question? Read the decimal fraction and write down the place value of each digit. Okay, we have to read the decimal fraction और उसका क्या बताना है हमें? Place value. Okay, so first is 6.13. Now tell me students, I'm not making columns, but you will make columns like this: digit, place value. Okay, now 6.13. 6.13. This 6 is on the unit place. ये कौन से place पे है? Unit place पे. This one is on the 10th place. 10th place, and this 3 is on the 100th place. Correct? 100th place. So 6.13. So place value of this 6. 6 into 1. लिखना है हाँ. 6 equals to 6 into 1. 6 ones are 6. Why? Because this 6 is on the unit place.
Then second 1. 1 is on the 10th place. So 1 into 1 upon 10. 1 into 1 upon 10. क्या आएगा? 1 upon 10 का क्या आएगा आंसर? 0.1. How 0.1? 1 into 1. 1 upon 10 आएगा. करेक्ट. और क्या आएगा उसका आंसर? इन द डिनोमिनेटर 1 0 इज देयर. तो होल नंबर नहीं है तो विल पुट 0. करेक्ट. And here denominator 1 0 is there, means after decimal point 1 place will come. So 0.1 is the answer. Now this 3 is on the 100th place. So 3 into 1 upon 100. 3 into 1 upon, wait, I'll clear it little bit. Okay. So 3 into 1 upon 100. Place is not there. So 3 into 1, 3. And downside 100 will come. Correct? Now in the denominator 2 zeros are there. Means in the answer after decimal point 2 places will come. Correct? डिनोमिनेटर में 2 जीरो, इसका मतलब आंसर लिखते वक्त डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस आएंगे. सो 1 प्लेस इज 0. व्हाई? बिकॉज इन द न्यूमरेटर 1 डिजिट इज देयर. क्यों एक प्लेस पे 0 आएगा? क्योंकि ऊपर सिर्फ एक ही नंबर है तो 0 आएगा और दूसरे प्लेस पे आएगा 3. ओके. सो आंसर इज 0.03. 0.03. I hope this is clear to you. Correct? Now second is 48.484. 48.84. This 8 is on the unit place. This 4 is on the 10th place. This 8 is on the after decimal point 10th place, and this 4 is after decimal point. So this is on 100th place. समझ में आ रहा है? डेसिमल पॉइंट के पहले वाले नंबर यूनिट 10, 100, 1000 ऐसे होते, एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट 10, 100 ऐसे होते. करेक्ट. सो दिस 4 इज ऑन द 10 place. So 4 into 10. So answer is 40. So place value of this 4 is 40. Now this 8 is on the unit place. So 8 equals to 8 into 1. Unit को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से. So 8 1 जा 8. Correct? Correct? Now this 8 again on the, can I use a different color for you? I'll use the yellow so you can understood it very well. 8. Wait. So 8. It is also not. Should I use red only? So 8 is on the 10th place. So 8 equals to 8 into 1 upon 10. 8 into 1 upon 10 का आंसर क्या आएगा? 0.8. 0.8. And this next one is what? 4. 4 is on the 100th place. So 4 into 1 upon 100. So answer is 4 upon 100. तो 4 upon 100 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 0. I'll write here 0.04. 4 1s are 4 upon 100. तो 4 upon 100 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 0.04. Okay, understood? And the last example we are taking from this problem set. Wait. We are taking from this problem set 0.59. Correct? I'll take 0.59. अब 0.59 है. Correct? So 0.59. Now 0 is on the unit place. Correct? This 5 is on the 10th place. See here, like this, 10th. And this 9 is on the 100th place. This 9 is on the 100th place. So 0 का unit place value क्या होगा? 0.
0 equals to 0 into 1. 0 ones are 0. Why answer is 0? Because 0 is on the unit place, and if you multiply any number by 0, you are getting 0. So 0 into 0, 0 into 1, 0. Now next is 5 is on the 10th place. So 5 into 1 upon 10. So क्या आएगा आंसर? 5 ones are 5. 5 upon 10. क्या आएगा आंसर? 0.5, because in the denominator 1 0 is there, means after decimal point 1 place will come. Okay, and the next 9 is on the 100 place, so 9 into 1 upon 100, what will come? 9 ones are 9 upon 100 will come. Now in the denominator 2 zeros are there, means after decimal point 2 places will come. Whole number नहीं है तो उसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग 0, and downside 2 zeros are there, means after decimal point 2 places will come. Correct? But here in the numerator one number is there, for सिर्फ 9 है तो पहले जगह पे क्या आएगा? 10th place पे 0 ही आएगा और 100 place पे आएगा 9, and so our answer is 0.09. Correct? Understood everyone? Understood everyone this one? Yes, up. Now see student, problem set 39. Now problem set 39. Question number 1 is, write how many rupees and how many paise. Okay, now first question is 58. First question is 58.43 rupees. 58.43. Now see student, 58 is a whole number. 58 is a whole number. So 58 rupees जाएंगे, and this 43 means 43 is coming after the decimal point. So this is a fraction. So it will come as a पैसे. Okay. So हमें बताना है ये क्वेश्चन में कि कितने रुपीज है और कितने पैसे है. How many rupees are there and how many पैसे are there. Okay. So 58 is a whole number. So 58 is a rupees. 58 is a rupees, and 43 is after the decimal point. So this 43 is after the decimal point. So 43 is a paise. 43 is a paise. Correct? Now see, rupees 9.30. Now, how many rupees are there and how many paise are there? So 9 rupees. Correct? And 30 paise are there. Correct? इतना ही सिंपल है. डेसिमल पॉइंट के जो आगे होगा वो होगा रुपीस, बिकॉज इट इज अ होल नंबर. डेसिमल पॉइंट के बाद जो होगा वो होता है पैसे, बिकॉज इट इज अ कमिंग इन अ डेसिमल फ्रैक्शन. वो डेसिमल फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद आ रहा है तो वो क्या होगा? पैसे होगा. वो छोटा होगा. डेसिमल फ्रैक्शन के बाद डिनोमिनेटर आता है तो वो छोटा होता है. समझ में आ रहा है? So 9 rupees 30 paise. We have to tell how many rupees and how many paise. Now next is rupees 2.30. 2.30. So here 2 rupees are there. 2 rupees are there and 30 paise. 30 paise. Correct no? Correct? इतना सिंपल सा है ये. Here and the fourth one, rupees 2.3. So here again 2 rupees are there and 3 paises are there. Correct? In the fourth example 2.3. Simple सा है. Next question, write how many rupees in decimal form. We have to write rupees in decimal form. Now question is given 6 rupees 25 paise. 6 rupees 25 paise. Now we have to write this in a decimal form. पहले हमें डेसिमल फॉर्म दिया था, हमें नॉर्मल में लिखना था. अभी हमें नॉर्मल दिया है तो उसका हमें क्या करना है? डेसिमल पॉइंट में लिखना है, मतलब ऊपर वाले जैसा लिखना है हमें. So 6 rupees 25 paise. So rupees, this is a symbol for rupees. So rupees 6. Okay,
6 rupees, it is a whole number. So after whole number, what we are giving? We are giving decimal point. And 25 paise, it is a small number. Small number मतलब वो fraction में आता है. तो decimal point के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 25 पैसे. Okay? So 6 rupees 25 पैसे. Okay? समझ में आ रहा है आपको? सिंपल सा है. सेकेंड 15 rupees 70 पैसे. 15 rupees 70 पैसे. So how again we'll write rupees 15 rupees. After 15 rupees we'll put the decimal point. 70 पैसे. We have written this in a decimal form. हम लोग ने इसको किस में लिखा है? डेसिमल फॉर्म में. So 15 rupees 70 पैसे. करेक्ट? करेक्ट. नेक्स्ट 22 rupees 4 paise. Next is what? Again 22 rupees and again give the decimal point because 22 is rupees. So 20 rupees and 4 paise and 4 paise. Simple सा है. We have written this in a decimal form. So 22 rupees 4 paise को हम लोग ने किस में लिखा? We have written this in a decimal form. 22 rupees and 4 paise. Okay. And the last 720 paise. Now here rupees is not given and only paises are given. Okay, rupees तो दिया ही नहीं है, सिर्फ पैसे दिया है. So what will do? हम कैसे करेंगे अभी इसे? See, 1 rupees equals to 100 पैसे. 1 rupee मतलब कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. Correct no? 1 rupees means 100 पैसे. So means 7 rupees equals to 700 पैसे. तो यहाँ पे 720 पैसे दिए. 720 पैसे दिए मतलब 700 प्लस 20 पैसे. करेक्ट नो? ऐसा ही होता है ना. 720 मतलब क्या? 700 पैसे प्लस 20 पैसे. बट 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे मतलब 700 पैसे मतलब कितने रुपीज होने चाहिए? 7 रुपीज. करेक्ट नो? सो 720 पैसे मीन्स व्हाट? 7 रुपीज. 7 rupees. Wait, I'll do again. 720 paise means what? 7 rupees will give the decimal point and this 20 paise will remain as it is. Okay, don't forget to give the rupees sign. rupees का sign देना भूलना नहीं है हमें. Okay, so 1 rupee मतलब 100 पैसे होते. तो यहाँ पे 720 है. 700 पैसे मतलब कितना हो जाएगा? 7 rupees. करेक्ट नो? 7 rupees. तो 7 rupees point 20 पैसे. सो 720 पैसे को हम लोग कैसे लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में? 7.20. 7.20. करेक्ट? करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वेरी सिंपल. नॉर्मल दिया है तो आपको डेसिमल में लिखना है और डेसिमल दिया है तो आपको नॉर्मल में लिखना है. करेक्ट? Now next question number 3. Write how many meters. Write how many meters and how many centimeters. Same. पहले था कि rupees और पैसे. Now we are having the question how many meters and how many centimeters. We have to write how many meters are there and how many centimeters are there. So first question is 58.75 meters. First question is 58.75 meters. So again same. जो यहाँ पे मीटर लिखा है तो इसके छोटा वाला क्या होगा? उसका यूनिट सेंटीमीटर होगा. करेक्ट ना? मीटर से छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर होता है. सो हियर 58 मीटर इज देयर बिकॉज 58 इज अ होल नंबर. सो 58 क्या आएगा? मीटर आएगा. एंड दिस 75 इज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट मींस 75 क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा. उससे छोटा वाला यूनिट भी आएगा. जब हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो उस वक्त बड़ा और छोटा यूनिट दोनों आते हैं. बट जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो सिर्फ एक ही बड़ा यूनिट आता है. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 58.75 मीटर इज गिवन ओनली मीटर. बट दिस डेसिमल फॉर्म वी आर गोइंग टू राइट इन अ नॉर्मल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म को हम लोग किस में लिख रहे हैं? नॉर्मल फॉर्म में लिख रहे हैं. ओके,
नॉर्मल वे में लिख रहे तो हम लोग के पास दो यूनिट आए, मीटर एंड सेंटीमीटर, बिकॉज आफ्टर डेसिमल पॉइंट स्मॉल यूनिट इज कमिंग। यहाँ पे तो सिर्फ ₹58.43 था, लेकिन हम लोग ने जब आंसर लिखा तो हम लोग ने क्या लिखा, ₹58.43 लिखा। रुपीज से छोटा क्या होता है, पैसे, दैट्स वाई पैसे इज कमिंग। आणि यहाँ पे क्या हो गया, मीटर था तो मीटर से छोटा क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। सो आंसर इज 58 meter 75 centimeter. How many meter and how many centimeter we have to tell them. Then next is a 9.30 मीटर, 9.30 मीटर। इसे कैसे लिखोगे आप लोग, इसे कैसे लिखोगे, 9.30 meter. Again, 9 is a whole number, so 9 meter will come. 9 meter will come, and this 30 after the decimal point, so small unit will come. 30 centimeter. 9 meter, 30 centimeter. Okay, understood? We'll see the one more example, sixth example. 91.4 मीटर, 91.4 मीटर, बहुत सिंपल सा है। 91 is a whole number, so meter will come, 91 meter, and 4 is a smaller because it is coming after decimal point, so small unit will come, 4 centimeter. तो यहाँ पे 4 क्या है, सेंटीमीटर में आएगा, 91 क्या है, मीटर में आएगा, करेक्ट। 91 मीटर 4 सेंटीमीटर, सिंपल सा। नाउ डेसिमल फॉर्म में दिया था, वी हैव टू राइट हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर। नाउ हाउ मीटर्स एंड सेंटीमीटर इज गिवन, वी हैव टू राइट इन अ डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, मीटर और सेंटीमीटर दिया है, तो हमें अभी किस में लिखना है, उसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म, हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर 50 centimeter. So 1 is a whole number, so we'll write whole number first. After whole number we are putting decimal point. This 50 having centimeter, this 50 is having centimeter unit. तो ये छोटा है, छोटा है मतलब वो किसके बाद आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा, करेक्ट ना। सो 1.50 मीटर। अभी सिर्फ जब डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं तो बड़ा वाला यूनिट ही आता है, जो होल नंबर को दिया जाता है वही यूनिट आता है। सो हियर 1.50 मीटर विल कम, ओके, 1.50 मीटर विल कम। सो वी हैव रिटन दिस इन अ डेसिमल फॉर्म, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। हाउ विल राइट दिस इन अ डेसिमल फॉर्म, 1.50 meter, 1.50 meter. Second is 50 meter 40 centimeter, 50 meter and 40 centimeter. How will write this in a meter decimal form, 50 whole number, so 50.40, and which unit will come, bigger unit, meter, because they ask us write in a मीटर फॉर्म। वो डेसिमल किस में लिखना है, हमें मीटर में लिखना है। सो व्हाट आंसर विल कम, 50.40 मीटर, 50.40 मीटर। ओके, समझ में आ रहा है आपको सबको, ओके। नाउ थर्ड वन, 10 सेंटीमीटर, थर्ड वन इज अ 10 सेंटीमीटर। नाउ हियर मीटर इज नॉट गिवन, here meter is not given, but 1 meter equals to 100 centimeter. यहाँ पे मीटर तो दिया नहीं है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर दिया गया है, बट 10 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये सबको पता है, यू हैव लर्न दिस इन अ 4th स्टैंडर्ड, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू राइट दिस 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर हमें किस में लिखना है, मीटर में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 centimeter. How will write this? Whole number is not there, so on the place of whole number we'll put 0. Okay, 0.01 meter. इस 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 0.01 मीटर, 0.01 meter. How you will write this 10 centimeter in a meter form, 0.01 meter. Okay, understood. And the last
2 centimeter. Okay, 2 centimeter. How you will write this in a decimal form? 0.02 मीटर. सिंपल, जैसे 10 सेंटीमीटर का किया वैसे ही 2 सेंटीमीटर का भी. करेक्ट. 0.02 मीटर. Write how many centimeters and how many millimeters. How many centimeters? Now, rupees से over, मीटर एंड सेंटीमीटर इज ओवर. अब सेंटीमीटर से छोटा वाला मिलीमीटर. So they ask us write how many centimeters and how many millimeters. How many centimeters and how many millimeters? 6. Wait. Question is 6.9 centimeter. 6.9 centimeter. So first, now centimeter is a bigger. तो सेंटीमीटर से छोटा वाला यूनिट क्या है? मिलीमीटर. करेक्ट. तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो आएगा उसको कौन सा यूनिट जाएगा? मिलीमीटर. करेक्ट. So 6 centimeter will come and 9 millimeter will come. Millimeter will come. Correct. So we have written this 6.9 centimeter as 6 centimeter 9 millimeter. Okay. Next at 20.4 centimeter. 20.4 centimeter. Now we have to tell how many meters are there. How many centimeters are there? How many millimeters are there? So again 20 is a whole number. So 20 will come as a centimeter. और सेंटीमीटर से छोटा वाला होता है मिलीमीटर. तो ये 4 क्या आएगा? After decimal point, this 4 will come as millimeter. Okay. Understood everyone? Understood? Now, here third one. Here third one is 0.8 centimeter. 0.8 centimeter. So we have to tell the millimeter and centimeter and millimeter. So your whole number is not there. Whole number है क्या? नहीं. So we'll write 0 centimeter. बड़ा whole number कोई यही नहीं बड़ा वाला. तो सेंटीमीटर कितने आएंगे? 0 ही आएंगे. And this 8 is after the decimal point. So 8 will come as millimeter. Correct? 0 centimeter 8 millimeter will come. समझ में आ रहा है? क्योंकि सेंटीमीटर की जगह पे कुछ नहीं है, वहां पे 0 ही आएगा. Understood बेटा? Now, the last question of this problem said we have to write centimeter and millimeter in the decimal form. अब हमें हम लोग ने सेंटीमीटर और मिलीमीटर बताया. अब हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया गया है. We have to write that in a decimal form. We have to write that in a decimal form. Correct? So first is 7 centimeter 1 millimeter. अब डेसिमल फॉर्म में लिखते वक्त हम लोग क्या करेंगे? बड़ा यूनिट ही लेंगे सिर्फ. सो 7 give the decimal point 1 and which unit will come? Centimeter. 7.1 centimeter. Okay, simple one. We have written this not in a decimal form. 7.1 centimeter. Next 16 millimeter. 16 millimeter. तो यहाँ पे 1 जो है तो उसे क्या लिखेंगे हम लोग? 1, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आता है. आप अगर स्केल ऑब्जर्व करते हो तो 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे लाइन्स आते हैं. दैट 1 लाइन इंडिकेट्स द 1 मिलीमीटर. एक लाइन का मतलब क्या होता है? 1 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. तो यहाँ पे तो 16 दिया है, मतलब 10 प्लस 6 16 है ना. बट 10 मीन्स व्हाट? 1 सेंटीमीटर. 10 मिलीमीटर मीन्स व्हाट? 1 सेंटीमीटर. तो ये 10 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर. एंड दिस 6 इज स्मॉलर. सो 6 मिलीमीटर. व्हाट आंसर विल कम? 16 मिलीमीटर का आंसर क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर. करेक्ट? करेक्ट. 8 millimeter. Now third one 8 millimeter. Now centimeter is not there. So centimeter is not there. यहाँ पे अगर 18 भी होता तो हम लोग 1 को क्या लिखते? क्या लिखते हम लोग? 1 सेंटीमीटर लिखते. बट यहाँ पे सिर्फ 8 है तो बड़ा नंबर तो कोई है नहीं. तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? होल नंबर 0.8 सेंटीमीटर. 0.8
centimeter. Okay, understood everyone? And here we finish the problem set 39 also. Okay. So everyone understood problems at 38 and 39. I hope no doubt is there. Okay. Teacher, Piyush is having doubt. Piyush Jamnik.